Hello everyone, welcome to LRDA Prep. My name is Samir Sartana, a plus educator on Unacademy, and this is a YouTube channel for your logical reasoning and data interpretation where you will get 100% LR and DI syllabus coverage for all MBA entrance exam preparation. Right on this channel, if you follow this channel, if you subscribe to this channel, you will be able to get access of 100% syllabus on LR and DI, which I'll be uploading in the coming days. 70 plus videos have been uploaded till date related to your syllabus for CAT and as well as for other MBA entrance exams. And in the coming days, we'll be uploading videos for the remaining syllabus also. Now, in this video, I want to discuss a very tricky puzzle, a puzzle to puzzle you. One of the most important puzzle, I would say, a very small one, but this give you the complete idea what the logical reasoning is all about. We can have a look at this set. So I want all of you to first give it a try, right? Before you watch the solution of the set that I'm just going to present to you, please have a look at the puzzle. Try this by yourself. It's a very small puzzle, only one question in it, right? But this give you the complete idea what the logical reasoning is all about in CAT exam. Let's first see what would be the approach of solving this puzzle. Please give it a try. Okay, pause the video and give it a try. Right. Now the question says, on a train, the staff were the guard, the TC and the driver. Their name listed alphabetically are Joshi, Rao and Shah. On the train are also three passengers with names Mr. Joshi, Mr. Rao and Mr. Shah. Okay. So I guess the first paragraph tell you that in a train, there are three different staff members. Their names are mentioned at TC, driver and the guard. And their name are Shah, Rao and Joshi. But there are also three passengers who are named as Mr. Rao, Mr. Shah and Mr. Joshi. And there's some facts which have been represented over here. And we are finally supposed to tell what is the driver's name. So we know that driver's name will be any of Joshi, Rao and Shah. तीनों में से कोई एक ही नाम होगा. Okay. And these are the some facts. Now, you see that all this information, right? The LR is all about interpreting all these information, taking the right inference from the statement. When I say this, for example, the first case, when I say that the guard lives halfway between Chandigarh and Delhi, I don't need to get confused कि वो किस सिटी में रह रहा है. Do I need to find out कि guard का city name क्या है? No. What I'm supposed to find out is the driver's name. That's my only purpose. Now, how can this information help me in finding this, right? How these two informations are connected? All you have to see is you just take an idea, note it down that guard is living somewhere between Chandigarh and Delhi. So let's say guard is living in city X. In city X, right? The inference of the first statement is not to find out the city of the guard, but to get to know that guard is neither living in Chandigarh nor living in Delhi. Guard na to Chandigarh reh raha hai, na Delhi reh raha hai. Okay, that's the meaning of it. So this is what the LR is all about, taking the right inference, right? The statement which is not directly mentioned in the question, you have to read between the lines. Something which is not directly mentioned, you have to infer it. Okay. Next statement tell me, Mr. Joshi earns exactly 2 lakh a year. Now, earning is does earning do I need to write down the earning of the remaining 3% also? What exactly is this information telling me? That Joshi earn exactly rupees 2 lakh. That means he's earning a value which is a complete integral values. I don't need to find out the money of all the remaining percentages also. What is their salary? No, just see, is there any line which can be used in reference to this? We'll talk about that later. Now let's first see the next information. Shah once beat the TC in the snooker. What will be the inference that you will take from this statement? Now, how does this statement is relevant in finding out the answer? What is driver's name? It is relevant. What is the relevance? What is the inference that you need to take? Shah once beat the TC. Now, Shah is one of the three names, right? Either Shah is either driver or TC or the guard. But when I say this statement that Shah is beating the TC, that means TC is not Shah. Otherwise, the statement would not have written statement में ऐसा नहीं लिखा होता कि शाह टीसी को बीट कर रहा है. अगर टीसी खुद शाह होता तो ये स्टेटमेंट पॉसिबल ही नहीं था. शाह अपने साथ नहीं प्ले करेगा, राइट? So Shah once beat the TC in the snooker tells me
that TC is not Shah. TC is not Shah. That's the inference that you need to read it, right? इस लाइन से ये इंफॉर्मेशन आपको निकालना है. Most of the logical reasoning set are based on this concept कि आपको स्टेटमेंट में जो एग्जामिनर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके पीछे की कहानी क्या है, क्या उसमें से कुछ और इंफॉर्मेशन बाहर निकल सकता है जो आपको हेल्प कर सकता है अपने आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए. दिस इज व्हाट यू नीड टू डू गाइस, राइट? ये चीज आपको करनी है बच्चों. मिस्टर राव लिव्स इन दिल्ली. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? जो दिल्ली में जो पर्सन रह रहा है उस पैसेंजर का नाम इज मिस्टर राव. मिस्टर राव, दिल्ली के अंदर मिस्टर राव है. अभी सिटी से ये इंफॉर्मेशन मेरे को दिया था, राइट? सो कहीं ना कहीं इन दोनों का आपस में कनेक्ट हो सकता है, राइट? तो ये कंफर्म हुआ कि गार्ड का जो नेबर होगा या कोई भी होगा वो मिस्टर राव नहीं हो सकता है, बिकॉज मिस्टर राव दिल्ली में रह रहा है और गार्ड जो है दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में कहीं रह रहा है. ओके, गार्ड्स नेक्स्ट डोर नेबर, गार्ड का जो नेक्स्ट डोर का जो नेबर है, वन ऑफ द थ्री पैसेंजर मेंशन्ड earns exactly 3 times as much as the guard. Now this is an important information that you need to take, that you need to read carefully. देखो यहाँ पे सैलरी की बात हो रही है, अर्निंग की बात हो रही है, और उसने ये बोला कि गार्ड का जो नेक्स्ट डोर नेबर है, वन ऑफ द थ्री पैसेंजर, वो वन ऑफ द थ्री पैसेंजर्स हो सकता है मिस्टर राव, मिस्टर जोशी एंड मिस्टर राव, मिस्टर जोशी और मिस्टर शाह. गार्ड का नेक्स्ट डोर नेबर is earning exactly 3 times. क्या 2 लाख रुपीस का वैल्यू किसी वैल्यू का exactly 3 times हो सकता है? Is it a value which is a multiple of 3? No, we know that 2 lakh is not a multiple of 3. So can I say अगर गार्ड का नेक्स्ट डोर का नेबर exactly 3 times अर्निंग कर रहा है, that means वो जो गार्ड का जो नेक्स्ट डोर नेबर होगा वो मिस्टर जोशी नहीं हो सकता है. गार्ड का नेक्स्ट डोर का जो नेबर होगा या तो मिस्टर राव होगा या फिर मिस्टर शाह होगा. Right? Mr. Joshi cannot be the neighbor of the guard. Cannot be the neighbor of the guard. क्योंकि Joshi is earning 2 lakh, which is not exactly 3 times of the guard income, right? So Joshi cannot be the neighbor of the guard. This is what the statement is trying to tell you, right? जो आपको actually में यहाँ से statement को read करना है. Okay. So शाह जो है वो TC नहीं है, right? और guard का जो neighbor है वो राव हो सकता है या शाह हो सकता है. और गार्ड जो है वो सिटी एक्स में रह रहा है, दैट मीन्स ना तो दिल्ली रह रहा है ना चंडीगढ़ रह रहा है, दोनों के बीच में किसी सिटी में रह रहा है. और यहाँ पे ये लिखा हुआ है द पैसेंजर लिविंग इन द चंडीगढ़ हैज द सेम नेम एज द गार्ड. ओके, पैसेंजर लिविंग इन द चंडीगढ़ हैज द सेम नेम एज द गार्ड. गार्ड का जो भी नेम होगा वो उसका जो भी नेम है दैट नेम इज सेम एज द सेम पर्सन हु इज लिविंग इन चंडीगढ़. अभी आपको कहानी में ये देखना है कि चंडीगढ़ में कौन रह रहा है. मिस्टर राव दिल्ली में रह रहा है, तो मिस्टर राव तो चंडीगढ़ में नहीं रह रहा है, राइट? फॉर श्योर. तो चंडीगढ़ में फिर कौन रह रहा होगा, राइट? मिस्टर जोशी जो है, राइट? चंडीगढ़ के अंदर यू सी दैट गार्ड नेक्स्ट डोर नेबर, वन ऑफ द पैसेंजर मेंशन हिम एग्जैक्टली 3 times as the guard, right? And the Shah, the passenger living in Chandigarh has the same name as a guard. That tells me that guard neighbor is not Mr. Rao, guard neighbor is not Mr. Joshi, guard neighbor is Mr. Shah. If guard neighbor is Mr. Shah, right, and guard is living somewhere between Delhi and Chandigarh, so और क्वेश्चन में ये दिया कि गार्ड का जो नेम है, राइट, द पैसेंजर लिविंग इन द चंडीगढ़ हैज द सेम नेम एज अ गार्ड, और गार्ड का नेबर हुआ मिस्टर शाह, और गार्ड का जो सरनेम है वो मैच करता है चंडीगढ़ के जो पर्सन चंडीगढ़ में रह रहा है उससे मैच करता है. कैन आई से दैट गार्ड इज नॉट शाह? कैन आई से दिस स्टेटमेंट दैट गार्ड इज नॉट शाह? नाउ दैट्स इट, द सेट इज सॉल्व्ड. नाउ टीसी इज नॉट शाह, गार्ड इज ऑल्सो नॉट शाह, क्योंकि गार्ड का नेक्स्ट डोर नेबर मिस्टर शाह है, बट गार्ड का जो सरनेम जो नेम है वो चंडीगढ़ के पैसेंजर से मैच करता है, और मिस्टर शाह चंडीगढ़ में नहीं रह रहा है. ये तो मिस्टर, अगर गार्ड का नेबर उसको होना है तो उसको सिटी एक्स में रहना पड़ेगा. दैट मीन्स गार्ड इज नॉट शाह, टीसी इज नॉट शाह, so the only one person that is left that can be Shah, and that person is driver. So therefore what is the driver's name? The driver name is Shah. A very beautiful puzzle, right? The answer to the question is Shah. All you have to say is बहुत अच्छा लर्निंग है इसमें, लॉजिकल रीजनिंग का पूरा इसके अंदर आई वुड से कि आपका कंसेप्ट है. कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग में कोई थ्योरी तो आपको करनी नहीं है, राइट?
इट्स नॉट दैट कि आपने गेम्स एंड टूर्नामेंट में कोई पर्टिकुलर थ्योरी किया और उस पर आपको एज इट इज सेम सेट मिल जाएगा, राइट? इट्स ऑल अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट यू विल बी रीडिंग, राइट, इन ए पैराग्राफ, इन ए लॉजिकल रीजनिंग और इन DI सेट, राइट? सो आपका इंटरप्रिटेशन अगर सही रहता है स्टेटमेंट्स का, and if you take a right inference out of every statement, you have a good chance of solving a set, right? So see that every statement is this statement is about salary, this statement is about living in living in different city, this statement is talking about some game, this statement is talking about the name of the city, this statement is is talking about the relationship between the multiple of salaries, right? कि earning कितना multiple है किसका। तो इन सारी स्टेटमेंट का आपस में कहीं कोई भी कनेक्शन नहीं है, बट सारी स्टेटमेंट से जो इन्फ्रेंस आपको मिल रहा है उन सारी इन्फ्रेंस का आपस में कनेक्शन है। दिस इज व्हाट द LR is all about. I guess this is a perfect puzzle to tell you what the logical reasoning is all about when it comes to the CAT exam, and you should be able to read the statements, take a right inference to solve the set, right? कितने भी difficult set हो, ultimately most of the sets comes under the category of data arrangement, right? So all you have to do is just keep on practicing the different data arrangement set. I would say this is also data arrangement, right? But again, it's a very tricky puzzle. बच्चे बहुत confuse हो जाते हैं। statement का right inference अगर आप नहीं करो तो आपको कुछ idea नहीं लगेगा कि question को करना कैसे है, right? So I hope this helps you in understanding the complete logical reasoning and कैसे आपको statements को read करना है, कैसे right inference आपको help कर सकता है question को solve करना में। I guess this helps you a lot. Thank you so much for watching this video. Once again, I just want to remind you that on this channel, LRDA Prep, you will get 100% syllabus coverage for your logical reasoning and data interpretation, right? And I'm also teaching live on Unacademy Plus for CAT exam and other MBA entrance exams. If you wish to attend my live sessions on quantitative aptitude, logical reasoning and data interpretation, अगर आपको live classes attend करना है, then you can use my referral code LRDI Samir to get 10% off on Unacademy Plus purchase. This will also give you this will also give you the access of all of my previous sessions that I have taken, as well as all of my live sessions that I'll be taking in future on Unacademy Plus. Thank you so much for watching this video. See you in the next class. Thank you.